Hello guys, welcome to Reactor File. I am Harnoor and he is Carl. And today we are going to be reacting to Rajat's speech. Comedy scene is from Pyaar ka Punch. Yep, Pyaar ka Punchnama. Okay. Yes, so let's get started. तेरा नेहा के साथ क्या चल रहा है? क्यों? क्या हुआ? वो आई थी सुबह. Read carefully. क्या बोली? यही कि तू बात नहीं कर रहा है and all that. क्या? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है. और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो. लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. एंड बुलशिट शी इज वरीड यार. उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज़ इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स. सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलती है मन करता है मुंह में कुछ ठूसूं. ट्रस्ट मी यार, 6 महीने में आई हैड इट ऑल. सब देख लिया मैंने. अबे कौन सा प्यार, कैसी रिलेशनशिप, काहे की खुशियां. रिलेशनशिप का मतलब ही होता है एन टू योर ओन हैप्पीनेस. इसके बाद ऑल यू गॉट टू वरी अबाउट इज उसकी खुशियां, उसका बर्थडे, उसके कुत्ते का बर्थडे, उसका न्यू ईयर जो कभी नहीं था. इन लड़कियों को ना कोई खुश नहीं रख सकता. हैप्पी वुमन इज अ मिथ. तू बैटमैन वाली को देख ले. साला जब तक बैटमैन नहीं बना तब तक बोलती रही तुम तो कुछ करते नहीं हो, ना कारा हो, ना पुंसक हो, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कैसे रह सकती हो. जिस दिन बेचारा बैटमैन बन गया उस दिन बोली तुम तो बैटमैन बन गए. अरे मुझे तो एक नॉर्मल इंसान चाहिए था. मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ. साला ना कहानियों का दोष है. लड़ी बॉलीवुड रोमांटिक मसाला. एक लड़का एक लड़की दोनों को प्यार हुआ, दोनों साथ साथ, फिल्म खत्म. इसके बाद की स्टोरी कोई नहीं बताता. इसके बाद की कहानी मैं बताता हूँ. इसके बाद लड़के ने लड़की को 2 दिन हक नहीं किया तो प्रॉब्लम. हक किया तो चेप हो रहे हो, इतना भी अच्छा नहीं लगता. साली शॉपिंग खत्म नहीं होती इनकी. पहले कुशन्स आए, फिर कर्टेन्स आए, फिर कुशन कर्टेन से मैच नहीं किया तो और कुशन्स आए. साले मग इतने हैं मेरे यहाँ कि उन्हें बेचने जाऊं तो महीने का खर्चा निकल आए. खरीदनी है. 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगी, टेबल लेना है, टेबल लेना है. 5 घंटे मॉल में बिता के एक सड़ी सी चप्पल उठा के लाएंगे और फिर अगले 2 हफ्ते दिमाग चाटेंगी, टेबल लेना है, टेबल लेना है. ऑफिस में काम कर रहा हूँ, फोन आ जाएगा. फोन उठाते ही बोल देता हूँ बात नहीं कर सकता. कितना मुश्किल है बात समझना. 2 मिनट कर लोगे तो क्या हो जाएगा. अरे 2 मिनट कर लूंगा तो तुझे क्या मिल जाएगा. मेरी माँ ठीक से तो कर पाऊंगा नहीं. और इसके बाद आई लव यू बोले बिना फोन काटा तो नाटक. सबसे ज्यादा दिमाग की दही इस मोबाइल फोन ने की. कतई घटिया इन्वेंशन है साली. कॉन्स्पिरेसी पट्टा है साला पट्टा. एक तो उनके ऐड भी देखो ना. लो जी 1 पैसे पर सेकंड और फोन करो और फोन करो. अरे कॉल सस्ती हो जाने से बात थोड़ी ना बढ़ जाती करने को. फिर इसका जवाब उन्हें भी दो. तुम्हारे पास बात क्यों नहीं करने को. यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी. तुम्हें हूं ही करना था तो मैंने तुम्हें फोन क्यों किया. अरे मेरी माँ, मुझे क्या पता तूने मुझे फोन क्यों किया. जाके भारती मित्तल से पूछना. तुझे मैं बता रहा हूँ उस एड में ना वो कुत्ता नहीं कुतिया है. सीरियसली शर्त लगा सकता हूँ. Wherever you go, we follow. तुझे क्या लगता है कोलंबस को पता नहीं था कि वो इंडिया नहीं जा रहा, गलती से पहुंच गया. नहीं, उसको पता था. वो बेचारा तो कहीं दूर जाना चाहता था. इंडिया जा रहा. नहीं तो 10 सवाल पूछती कहाँ जा रहे हो. अच्छा तुम्हें पता भी नहीं कहाँ जा रहे हो. सीधे सीधे क्यों नहीं बोलते मुझसे कहीं दूर जाना चाहते हो. आज तक बेचारे का मजाक उड़ाती है दुनिया. ऑफिस में काम कर रहा हूँ, एसएमएस आ जाएगा आई लव यू. ठीक है मैं भी एसएमएस कर देता हूँ आई लव यू टू. इसके बाद एसएमएस पे एसएमएस शुरू. अबे काम क्या करती है ऑफिस में. 2 एसएमएस का रिप्लाई मत करना, तुरंत फोन आएगा. फोन मत उठा तो 10 मिनट में मैसेज आ चुका होगा. आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर. 10 मिनट में बाबू आई लव यू से आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर. एंड दिस इज व्हेन दे आर नॉट इवन डाउन. अब पता चला ये आदमियों को इतने हार्ट अटैक क्यों आते हैं और ये बंदे इतने सक्सेसफुल क्यों होते हैं. बिकॉज़ दे डोंट हैव अ वुमन टू स्क्रू देयर हैप्पीनेस. लोग कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन. ट्रू, बट कोई ये नहीं बताता कि बिहाइंड एवरी अनसक्सेसफुल मैन आल्सो देयर इज अ वुमन. कोई भी बता सकता है कि अनसक्सेसफुल लोगों की तादाद सक्सेसफुल लोगों से कई गुना ज्यादा है इस दुनिया में. साला ऑफिस में काम कर रहा हूँ, कह रहा हूँ लेट हो जाऊंगा तो खाना नहीं खाएगी, फिर भूखी सो जाएगी. अरे मैं कह रहा हूँ खा लो तो दिक्कत, क्या करूँ नौकरी छोड़ दूँ. फिर साले घर जाओ, पहले इन्हें मनाओ, इन्हें खिलाओ. इनके बाद खुद की भूख तो वैसे ही मर जाती है. इस सब के बाद भी अगर इंसान किसी तरह कोने में जाके शांति से बैठा हुआ है ना चुपचाप, तो क्या घड़ी घड़ी क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो. अरे कुछ नहीं सोच रहा मेरी माँ, ये सोच रहा हूँ तेरा मुंह कैसे बंद करूँ. क्या सोच रहे हो, कैमरा लगा दूं दिमाग में. इस सब के बाद वी नेवर टॉक, वी नीड टू टॉक. आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग एनीमोर. मैं तुझे बता रहा हूँ यू कैन नॉट डिस्कस एनीथिंग विद अ वुमन बिकॉज़ दे कॉल इट अ डिस्कशन, बट एनी डिस्कशन विद अ वुमन इज एन आर्गुमेंट. आर्गुमेंट में तो तू बॉस उनसे जीत ही नहीं सकता. बिकॉज़ हम आदमियों की एक बेसिक नीड होती है टू मेक सेंस इन एन आर्गुमेंट. लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता सेंस इसी बेकार सी चीज की वजह से वो आर्गुमेंट कैसे हार जाए. एक तो आज की बात पे आर्गुमेंट आज होगा ही नहीं. आज की बात पे झगड़ा होगा 2 महीने बाद. साला याद भी नहीं होता है 2 महीने पहले हुआ क्या था. लड़कियां बचा के रखती है. ये छोटा हथियार नहीं, ये बड़ा हथियार है. इसे बड़ी लड़ाई में यूज करेंगे. तू कभी ट्राई कर लियो इसको सही साबित करने की. तुझे लगेगा होगा तो अपनी बात को साबित कर लेगा, लेकिन तभी एक आवाज आएगी उंगली नीचे करो.
तूने ध्यान भी नहीं दिया होगा, लेकिन तेरी एक नादान सी उंगली उनकी तरफ पॉइंट कर रही होगी, and suddenly the whole argument will flush down the gutter. और मुद्दा ये रह जाएगा, how dare you point a finger at me? किसने बनाया रूल? किसने? साला वो बीच आर्गुमेंट में तुम्हें जूता फेंक के मार दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम उनकी तरफ एक उंगली पॉइंट कर दो, सारा मुद्दा खत्म, वो सही तुम गलत. शादी के पहले वो नागिन मीन क्यों बजता है? क्यों बजता है? क्योंकि ना बैंड वाला भी तुम्हें चेतावनी दे रहा होता है कौन आ रहा है तुम्हारी जिंदगी में. इनका सिग्नेचर ट्यून है वो. अब ये बता, वो क्या करने आई थी तेरे पास यार? सेम चीज मैं करूँ तो उसके किसी फ्रेंड को कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स गिनाऊं तो कहेगी, अच्छा तुमने मेरी फ्रेंड को कॉल किया, तुम उनकी सिंपैथी गेन करना चाहते हो? व्हाई डोंट यू गो एंड स्लीप विद हर? इट्स रिडिकुलस यार. वो उंगली मेरे साथ भी हुआ है. Yes. It's relatable, right? Well, you know, there's one thing that is fairly universal to all men, and that is kinds of problems. Yes, it's a universal thing that all men deal with. I can tell you. First of all, it was hilarious. It was hilarious, and I'm curious to know how much of it was improvised, or if the entire thing was written, if the entire thing was scripted. I would be curious to find that out, because it was a very long monologue. Yep. Yeah, I mean, it's 2 minutes, which is, it doesn't 5 minutes. Doesn't sound like 5 minutes. It doesn't sound like a lot, but writing all of those words down, like on a sheet of paper, it would be very long. So I'm curious if I assume he didn't memorize the whole. Yep. But anyway, the point is like, you're a very young man, and perhaps this insight will not help you immediate future, but for those of you watching who are actively in relationships, young men such as Harnor, even older guys that just do not have a lot of experience, it's important to keep in mind that something that has helped me, I should say, that it's important to keep in mind that women do not always reason with words during arguments. Well, yeah, no, this is very important. This is very important, and I'm not saying this in any way to be condescending or derogatory towards women in general, but it's something that is lost on men almost universally, is that women do not necessarily care about putting words in a particular order in order to get some sort of a message across. It's true, but it doesn't necessarily mean that they are not using a form of reasoning. But in my experience, women more frequently will use sort of emotional reasoning in order to get their points across. So, for example, if they are upset with you, they will say whatever it is that they need to say in order to hurt you, in order to communicate the fact that they are upset. The words and like the context and all that, it doesn't really matter. Like, none of that is really significant. So it's likewise important to remember that communicating with women, if you want to approach it in a quote-unquote rational way, keep in mind that it is often important to communicate emotionally. It's important to effectively communicate your emotions, and the words and the organization behind them is often secondary. So we can have longer discussions about that. That seems to be the issue that he's dealing with right now, is that he's trying to approach his relationship to a woman by using rational arguments, but what he doesn't realize is that his approach is contrary to the rationality of most women in general. So yeah, we can address that perhaps with more concrete examples, another discussion, but sure. Just something to keep in mind. Yep, just something to keep. And one more thing, the best dialogue is that every discussion with a woman is an argument. Do you agree or not? Of course not. I mean, of course it's not entirely true, but there is certainly. I will say this: it is often the case that it is difficult to have what would literally be thought of as a philosophical discussion with a woman, because in order to, this is a little bit tangent here, but just bear with me, in order to have what is sort of literally thought of as a philosophical conversation, you have to have an emotional distance from whatever the topic is.
as if to approach an objective understanding of whatever the subject is. And women are frequently emotionally invested in whatever it is that they're discussing. So it is an ideal of philosophy that you are supposed to be able to distance yourself from whatever the subject is in order to approach it in a logical way. And although this is common to all people, I mean, it's difficult to have an unbiased opinion about anything. So it's not like men are completely capable of doing this either, but they're better at appreciating that ideal, I will say. They're better at appreciating the ideal. Whereas women, it's generally been my experience that women are much more emotionally invested in identifying with their point of view on a certain subject. So, for example, whether or not America was right to get involved in Vietnam, right? This which is just the first thing that came to mind. Don't ask me why. It would be easier, I think, for a man to appreciate that and come at that argument from an objective point of view of this is the reason why we got involved and this consequence for that involvement. Whereas a woman would more likely be emotionally dependent on her point of view, as if to question her point of view is to question her as a person. It's not necessarily. It's difficult to get a woman to separate herself from her opinion, as this is something that is separate from who I am. So yes and no, I guess, is the answer to that. Of course, you can have conversations about things that are trivial, that don't matter. But it is often a problem that women cannot separate their identity from their opinion. So that makes sense. Be careful. Sure. So just be aware of this. This is something that happens. Yep. All the time. Yes. Yeah. I totally agree. So. Yep. That those are also some of the reasons that I don't want to get married in future. Yep. So we're gonna work on this. Yeah. Sure. We're gonna work on this. Okay? Surely. You can't be afraid of the future. Yeah. Can't be afraid of the future. Surely. Yep. Anyway. Yes. So that's all we have for today. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe. And we are now going to the gym, and we will see you guys in the next one. Namaste. Goodbye.